Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for giving me opportunity to be the part of this wonderful course. And my talk is assessment and management of instability. And since morning, we have repeatedly listening the same thing from different faculty members. And I think most of this talk has already been covered and discussed. So I'll be brief and I'll try to be interactive, and I will not present all these slides for this talk. So let's start with the instability. As you all know, the instability broadly, we say that instability is of broadly two types: femorotibial and telefemoral. और femorotibial में हमने क्या डिस्कस किया था कि it may be an extension instability or a flexion instability, or extension again of two types. ये हम रिवाइज कर रहे हैं सारी बात. Extension may be of two types: symmetrical instability and asymmetrical instability. Now we'll stop here for symmetrical instability in extension. So when there is instability in extension, what we expect? There is more bone cut in the extension gap, right? So there are two ways to get loosening of the extension. Either you cut more bone from the femur, distal femur, or you cut more bone from the proximal tibia. So that creates a larger gap compared to the flexion gap. So that is instability in extension. अब ये instability extension किस तरह की होती है? It is basically a mediolateral instability, side to side. ठीक है? अच्छा. Suppose there is more cut from the proximal tibia, just proximal tibia. So that is instability in extension, which is symmetrical. इसको कैसे rectify करेंगे? Increase the size of the polyethylene. Just by increasing the size of the poly. Very good. Again, if the same thing happens, but by cutting more bone from the distal femur, अब again instability आ गई. Now this is a point जो हम अभी बड़ी देर से discuss कर रहे हैं, which is called joint line elevation. अब normal practice primary knee में और normal गलती क्या होती है कि जब हम देखते हैं flexion gap extension gap बढ़ गया तो हम हमेशा उसको fill up करने की कोशिश करते हैं by putting more thicker polyethylene. अब इसको thicker polyethylene डालेंगे तो क्या होगा? दो प्रॉब्लम होंगी: joint line elevation और more stuffing in the posterior gap. तो posterior gap बहुत tight हो जाएगा तो joint line ऊपर चली जाएगी, right? अब जब joint line ऊपर गई तो फिर सारे के सारे sequelae उसके प्रॉब्लम शुरू होते हैं. नंबर 1, पटाला बाहा जो भी हमने डिस्कस किया, right? नंबर 2, joint line elevation क्या होगा? Mid flexion instability. तो ये भी हम बताते हैं mid flexion instability क्या होती है. So the problem rectification in case when there is more bone cut from the distal femur is by doing augmentation or distalization of the femoral component by thicker augments. ये तो हो गई instability in extension. Now instability in extension but asymmetrical. अब asymmetrical का क्या मतलब? आपने कट्स रेक्टेंगुलर दे दी लेकिन आपने डर के सॉफ्ट टिश्यू को प्रॉपर्ली रिलीज ही नहीं किया. अब वेरस नहीं था तो वेरस नजर आएगा, वेलगस नहीं था वेलगस नजर आएगा. तो उसको ऐसे रेक्टिफाई करना है by not cutting the bones but by doing symmetrical releases on the medial or the lateral side depending upon the type of deformity. ठीक है, इसका आपको सबको पता है. अगर वेरस नहीं है तो अपने मीडियल स्ट्रक्चर्स को किस सीक्वेंस से रिलीज करना है, और अगर वेलगस है तो अपने लैटरल स्ट्रक्चर्स को किस तरह रिलीज करना है. राइट? इतनी बात समझ आ गई? आगे चलते हैं. फ्लेक्शन इंस्टेबिलिटी. नाउ फ्लेक्शन गैप इज बेसिकली a gap between the posterior femur and the proximal tibia. बना कैसे? आपने posterior femur को बगैर सोचे समझे ज्यादा काट दिया, राइट? अब इसको भी गलती हम प्राइमरी में क्या करते हैं? थिकर टिबियल ट्रे डालने की कोशिश करते हैं. उससे क्या होगा? फ्लेक्शन गैप
उधर ही रहेगा, एक्सटेंशन का और टाइट हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी रेक्टिफिकेशन क्या है? Increase the size of the femoral component. Posterior finger, or offsize the size of the femoral component, or use posterior augments. तो ये तो होगी बात. Mid flexion की बात करते हैं. Mid flexion कौन डिफाइन करेगा? इसकी अच्छी सी डेफिनेशन कौन बताएगा? Anyone? Now in mid flexion instability, it's a newer term. ये पिछले 8-10 साल से पता चला कि ये भी कोई चीज होती है. The patients usually present with pain, little bit, giving way, and giving way not in the full range. It is at certain point. By definition, mid-flexion instability is the instability in which the knee is stable in extension. It is stable in 90-degree flexion, right? But in between, maybe at 30 degree of flexion, the knee is unstable mediolateral. Now the reason is the same, joint line elevation, patella baha, right? तो इसको क्या कैसे रेक्टिफाई करेंगे? इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? Again, distalization, because the joint line is elevated. ठीक है? Now I will briefly discuss about patellofemoral instability. This is the most important part of the primary total knee faults. हम बड़ा अच्छा टिपिकल कंपोनेंट डाल देते हैं, फेमरल कंपोनेंट भी अच्छा डाल देते हैं या डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैटेलोफेमरल को हम ध्यान देते नहीं. Now there are so many problems with unhappy knee because of patellofemoral maltracking. A patella moves in the interior surface of the femoral component and it remains in touch throughout the range of movement. Flexion शुरू करें और end तक जाए, patella should remain in touch. The medial facet of the patella should remain in touch with the femoral component. ये तो normal है. अब patella अगर out होता है तो किधर out होता है? Lateral. This is called lateral maltracking. तो lateral maltracking कैसे बनेगी? Just imagine, because of malpositioning of the components. Femoral component, उसमें दो aspect याद है. एक, अगर आपने femoral component को internally rotate कर दिया, तो patella would be out. Just imagine, internal patella would be lateral. Number 2, medialization. Femoral component को आपने थोड़ा medialize fix कर दिया. Again, the socket would be out. Third, tibial component को भी अगर आपने internally rotate कर दिया, again would have the same result. और patella की आपने कटिंग प्रॉपर नहीं की या उसको अंडरकट किया. अंडरकट करने से क्या होगा? अब जब बटन फिक्स करेंगे ओवर स्टफिंग हो जाएगी. ओवर स्टफिंग से क्या होगा? lateral retinaculum would be tight and again dislocated. So undercutting of the patella and faulty placement of the femoral and the tibial components leads to patellofemoral problem. एक और बचा, lateral placement of the button. Yes, lateral placement of the button. And that completes everything. Yes, lateral placement of the button. And how to rectify? If the femoral component, tibial component, they are not too much faulty, and you flex the knee, check the position of the patella, it remains out. The first thing to perform is lateral release of the lateral retinaculum. If the patella moves now in the socket, okay. If not, is there any other way? Then the described bony procedure, which is medialization of the tibial tuberosity. And in extreme conditions, when malpositioning of the component is severe, then there is no point without doing a reveal TKR. Components could adjust. So this is all about a brief summary of the instability. Any question? How can you assess for mid-flexion instability for a height? Mid-flexion instability, you always check in its flexion, and when you check the range of movement, the patient has something like click sign or clunk sign, or sometimes the patient feels little bit pain.
and पर ऑपरेटिव भी आपने जॉइंट लाइन देखी, सिर्फ जॉइंट लाइन आप देखिए, अगर आपकी जॉइंट लाइन ऊपर गई है तो आपका फ्लेक्शन एक्सपेक्टेड है। ट्रायल कंपोनेंट्स आते हैं, ट्रायल कंपोनेंट्स के बाद 30-40 डिग्री के टोटल फ्लेक्शन, मिड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, तीनों में वही सारा